On page number 50, there is an exercise B. Rearrange these words in the correct order to form sentences. Students, before doing this exercise, I would like to explain about the adjectives. What are adjectives? Adjectives are the words which describe the noun. उस समय हमें क्या रूल फॉलो करना है? अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं तब वी हैव टू यूज लाइक दिस: नंबर, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल, और फिर उसके बाद हमने लिखना है नाउन. मतलब ये सारे एडजेक्टिव्स पहले लिखे जाएंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट द नाउन. That noun will be written for which these adjectives are given. ज़रूरी नहीं है कि इतने ही सारे adjectives हों, पर एक से ज़्यादा adjectives हों तो ये वाला सीक्वेंस हमें फॉलो करना है. Now look at the sentence number 1. Murli has a blue new bag. Whenever we are going to form a sentence, first of all we have to write the subject. Always subject is noun or pronoun. Here Murli is the noun, that is the subject, and bag is also a noun which is the object. After the subject we use helping verb or the verb. Here we are having helping verb. Now it's the turn to use the adjectives. हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? नंबर. यहाँ पर एक लेटर दिया है A, which means 1. So the number is, see the quality. Yes, quality is there. New. Then size. No size is given of the bag. एज, किसी की एज नहीं बताई है. शेप भी नहीं बताई है बैग की. देन कलर इज गिवन. कलर इज ब्लू. देन मटेरियल, किस चीज का बना है बैग, वो भी नहीं बताया. तो उसके बाद में लास्ट में हमें क्या यूज करना है? नाउन, फॉर विच दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. सो द सेंटेंस इज मुरली हैज अ न्यू ब्लू बैग. सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्वालिटी, देन कलर, देन नाउन विच इज द ऑब्जेक्ट. नाउ look at the sentence number 2. Jumbled words are given for the sentence number 2. Bought to Ashima lovely socks, yellow woolen. Subject is Ashima and object is socks. Two nouns are there, Ashima and socks. Ashima will be the subject and socks will be the object. And then we will write the verb, that is bought. According to these rules which are given in this table, we have to find number. Is any number is given in do we have any number in these words? Yes, we are having this number 2. Ashima bought 2. उसके बाद क्वालिटी. क्वालिटी क्या होनी चाहिए सॉक्स की? लवली. तो सबसे पहले ये आएगा आशिमा, देन नंबर 2 पे बॉट, नंबर 3 नंबर 4 पे क्वालिटी, देन साइज. सॉक्स का साइज इसमें नहीं दिया, सो विल नॉट राइट. आफ्टर दैट एज, सॉक्स की कोई एज नहीं है. शेप, सॉक्स की शेप भी नहीं बताई है इसमें हमें. देन कलर, यस, कलर ऑफ द सॉक्स इज गिवन ओवर हियर, येलो. नंबर 5 वर्ड कौन सा होगा? येलो. देन मटीरियल, सॉक्स किस चीज की बनी हुई है? दैट इज मटीरियल, वुलन. नंबर 6 पे आएगा वुलन. अब ये सारे एडजेक्टिव्स हम यूज कर चुके. लास्ट में हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट विच विल बी द नाउन फॉर विच दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. That will be at the number 7.
So how I will write this sentence? Ashima bought two lovely yellow woolen socks. Understood? Now look at the sentence number 3. Again, first of all, I'll find out the subject, that is Mayank. Then verb. Mayank wears a. What does he wear? He wears a watch, which will be written at the last because Mayank is the subject, watch is the object. Then adjectives which we have to use: round, beautiful and big. According to this table, I will find out the sequence of the adjectives which will be used for the watch. First of all, number. For watch, the round, beautiful and big adjectives are used. Now we will arrange these adjectives according to this table. First of all, we'll find the number. Letter A, which Then means quality, 1. round, big, beautiful. The quality is beautiful. So, Mayank wears a beautiful. Then, size. Size is big. This will be at the number 4. Then, age. No age is there of the watch. Shape. Yes, shape is given. That is round at the number 5. Then, color. No color is given. No material is told here. Of which material the watch is made. No, it's not given. Then, noun. नाउन क्या है, किसके लिए हमने ये सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, दैट इज वॉच. देन व्हाट विल बी द आंसर? मयंक वियर्स अ ब्यूटीफुल बिग राउंड वॉच. Students, here I had explained about the sequence of the adjectives, how to use these adjectives in a sentence according to their sequence. So, number 1, 2 and 3 sentences I had explained. Now, number 4, 5, 6 and 7 will be done by you. So, you try to do these. First, you try to understand the table of the sequence of the adjectives. Then you complete this exercise, exercise B.